So as per the TCM, there are 5 reasons for the high blood pressure. TCM के अनुसार हाई ब्लड प्रेशर होने के 5 मुख्य कारण हैं. So these are the 5 reasons. So the number 1 reason, ascending liver fire. जब लिवर फायर बढ़ती है, जब गुस्सा बढ़ता है, जब कोई व्यक्ति अल्कोहल पी लेता है, जब किसी व्यक्ति के अंदर बहुत एग्रेशन बढ़ता है, when the person is aggressive, drinking the alcohol regularly or having too much liver fire, liver heat, and there are many other reasons might cause for the they might be increasing the liver fire. ऐसे कोई भी कारण जो लिवर फायर को बढ़ाने वाले हों वो बीपी को बढ़ा सकते हैं. So the as per the TCM, the first cause of the high blood pressure is ascending liver fire, right? तो अगर किसी ने गुस्सा किया, गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई, चेहरा लाल हो गया, एकदम से, उसे कहेंगे लिवर फायर. So the person is becoming angry, and due to the anger, the face is flushed, the eyes are red, person is very aggressive, anger with full of anger. So that is called the BP because of the liver fire. वो liver fire का blood pressure है. Okay. So the first cause will be liver fire as per the TCM. The cause number 2 for the high blood pressure बढ़ने का जो दूसरा मुख्य कारण है वह है ये empty heat वाला कारण है. Empty heat वाला means the deficiency of the kidney yin causing the excess of yang. So there is a deficiency of the yin and in the result there is a high yang. yin की कमी हो गई, परिणाम स्वरूप yang बढ़ गया. कि एयर कंडीशन बिगड़ गया, अब आप बोल रहे हो गर्मी लग रही है, तो उस गर्मी का एक ही इलाज है, एयर कंडीशन को ठीक करो. So if the air condition is not working, what is the treatment? Improve the air condition, correct the air condition, right? So this is the second cause, the deficiency of the kidney yin causing the excess of yang. उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक परिश्रम करता है, वर्कोहलिक होता है, रात्रि जागरण करता है. हमने कभी, हमारे पास एक सिंगर आए थे, सिंगर, तो जब शादियां होती हैं तो रात भर जाके गाना गाते हैं, है ना, और उनका बीपी बढ़ गया. So there is a singer and when he is singing the song, when he is going in the party, so whole the night he is singing a song, whether he is feeling sleepy, but they have to sing, he has to sing the song. So this is called yin deficiency. When the person is not taking enough rest, suffering with the yin deficiency, जब कोई व्यक्ति ठीक से विश्राम नहीं करता है तो उसके अंदर yin की deficiency हो जाती है, right? जैसे दिया जलता जाए और आप तेल उसमें डालो नहीं तो फिर क्या होगा? So this is called empty heat. This is the second cause for the high blood pressure. There are many people are suffering with this types of the high BP. When the doctors suffer with the high blood pressure, this might be the cause. अगर आप में से किसी को भी high blood pressure हो जाए तो 70 to 80% संभावना है कि यही होगा, especially in the male. Why? Because you are working mentally, you are going in the clinic, then you are studying a lot, you are studying your books, reading a lot. Okay, and even patient is giving stress, doctor कब ठीक होगा, है ना, patient भी रोज 10 साल की पुरानी बीमारी और 3 दिन में पूछेगा डॉक्टर और कितने दिन लगेंगे. So when we are under stressful condition, so our yin is getting consumed. So doctor is also getting the high blood pressure. Okay, ठीक होगा, धीरे धीरे होगा, अभी बीज डाला है, पेड़ को उगने में टाइम लगेगा, है ना. Okay.
So this is the second cause. Even if any doctor, not only the acupuncture doctor, any doctor, maybe allopathic doctor or the cardiac surgeon or the any other doctors, when they are also getting the high blood pressure and the stroke, most of the time they having yin deficiency. जब एक डॉक्टर को हाई ब्लड प्रेशर होता है या स्ट्रोक आ जाता है तो मुख्य रूप से उसका कारण होता है yin deficiency, because they are reading a lot, working a lot. अगर एक साइंटिस्ट को हार्ट अटैक आ जाए, एक साइंटिस्ट है, वो काम करते करते हार्ट अटैक आया और चल बसा, मतलब किडनी इनडेफिशिएंसी, kidney indeficiency causing empty heat, causing high blood pressure and the stroke. तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा वर्कोहलिक हो जाता है, न सोने का ध्यान, न खाने पीने का ध्यान, बस काम काम काम, नो आराम, तो हो जाती है किडनी इन की डेफिशिएंसी और हो जाता है काम तमाम. So this is the second cause. Now the third cause will be, as per the DCM, there are 5 causes for the high blood pressure. The cause number 3, obstruction of the phlegm and dampness. Obstruction of the phlegm and dampness. कि शरीर में फ्लेम बना, डैम्पनेस बनी और उसने जाके नस नाड़ियों को ब्लॉक कर दिया. So there is a formation of the phlegm and the dampness, blocking the path, blocking the meridian, blocking the coronary arteries, blocking the multiple arteries, creating the blockages. ये किसको होगा? जो लोग ज्यादा ग्रीसी खाना खाते हैं, खूब फ्लेम बनता है उनके शरीर में. जो लोग ज्यादा ठंडा खाते हैं, when the people are eating too cold food. So how will you do the measurement that this is the cold food? जैसे गर्मी की ऋतु आएगी तो ठंडा पानी पीना चाहिए, लेकिन मटके का, फ्रिज का नहीं. लेकिन जो व्यक्ति फ्रिज का पानी पिएगा, उसके शरीर में फ्लेम का निर्माण होगा, डैम्पनेस का निर्माण होगा, और आगे चल के अगर उसे ब्लड प्रेशर होता है तो हो सकता है कि फ्लेम ने और डैम्पनेस ने मार्ग अवरुद्ध कर दिया हो. So this is the third cause of the high blood pressure. The flame and the dampness is obstructing the path. This is the third cause. It's a very common cause nowadays because people are not doing the fasting, just they are eating breakfast, lunch, dinner and two more snacking, two more snacks. एक तो ब्रेकफास्ट भी किया, लंच भी खाया, डिनर भी खाया और बीच में नमकीन बिस्किट भी खाए, चाय बिस्किट ले लिए, दोस्त आया तो चलो और एक बार हो जाए. तो होगा क्या? पचेगा नहीं, खाना तो पचेगा नहीं, तो क्या बनेगा? फ्लेम बनेगा, डैम्पनेस बनेगी, और फ्लेम और डैम्पनेस जहां जमेगा वहीं सूजन, दर्द, ब्लॉकेज और ब्लड प्रेशर क्रिएट करेगा. तो पेट को कुछ समय खाली छोड़ना बहुत जरूरी है ना. सो वी शुड लीव द स्टमक फॉर फ्यू आवर्स, जस्ट डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर सम टाइम. So when you are not eating anything for some time, what's happening? जब आप कुछ समय के लिए कुछ नहीं खाएंगे तो यही फ्लेम ऊर्जा में बदल जाएगा और शरीर के द्वारा प्रयोग कर लिया जाएगा. Body will use this flame for the energy. Body will use this dampness for the energy, because dampness and flame also one types of energy. It will convert in the form of energy. Body will use it, right? शरीर इसका प्रयोग कर लेगा. लेकिन अगर इसका प्रयोग नहीं किया गया तो यही आगे चल के बीमारियां देगा. So when there is a too much flame and dampness in the body, it will create the overweight, obesity, lots of cholesterol, fat deposition and high blood pressure. तो जब किसी व्यक्ति का शरीर मोटा हो, बहुत ज्यादा मोटा हो और उसका खाने पीने पर नियंत्रण ना हो, तो समझ जाना इसके शरीर में फ्लेम और डैम्पनेस का कचरा जमा हुआ है. So this is the third cause of the high blood pressure. Now moving to the fourth cause. ध्यान रखिएगा, सब मैं पूछूंगा आपसे बाद में. I will ask everything from you in the last.
The fourth cause of the high blood pressure is interior movement of the liver wind. What is that? Interior movement of the liver wind. इसका क्या अर्थ है? So the fourth cause, the fourth cause of the high blood pressure is interior movement of the liver wind. इसका मतलब क्या है? आपने कभी देखा है जब एक दुबला पतला सूखा साखा आदमी लड़ने के लिए उतारू रहता है, बेंदा, very lean and thin person challenging the weak person. Okay, come on, come on. So what is interior wind? Liver wind क्या है? What is interior wind? Interior wind means कि ब्लड की कमी होगी तो अंदर विंड पैदा हो गया. Like the female are losing blood every month, and the female are having more chances of blood deficiency. And on the one side they are losing the blood, on the other side they are not eating the food, not eating the right and nutritious food, and even they are not sleeping on the time, so they are suffering with the liver blood deficiency. जब महिलाएं समय पे खाना नहीं खाती, समय पर सोते नहीं, और ब्लड तो लॉस होता ही है, और किसी भी कारणवश जब ब्लड की कमी हो जाए तो विंड बढ़ जाता है. उसे कहते हैं इंटरनल विंड, कि बाहर से विंड नहीं आया, कि बाहर से विंड का कोई आक्रमण नहीं हुआ, अंदर ही पैदा हो गया खुद. There is no any attack of the wind from outside. Wind has created inside. Wind has created inside. How to know the blood deficiency? Blood deficiency को पहचानने के लक्षण जीभ से भी पता कर सकते हैं और लक्षणों से भी पता कर सकते हैं. When the person is suffering with the blood deficiency, they are getting giddiness in the evening. I am feeling weak and giddy. Suppose if there is a blood deficiency, blood is not reaching to the brain, then forgetfulness, memory loss, शाम को चक्कर आना, चीजों को भूल जाना, और गर्दन की मांसपेशियों में दर्द होना, ये सब ब्लड डेफिशिएंसी के साइन हैं. These are the signs. So when there is a blood deficiency, there will be internal wind formation. Internal wind formation will create the high blood pressure. Even it will create the stroke. I have seen one female. मैंने आपको बताया भी था, उसके हस्बैंड ने मुझे रात को 12 बजे कॉल किया कि गुस्सा कर रही है, डाइवोर्स की धमकी दे रही है, रात को 12 बजे. कई बार फोन आया, 3-4 दिन लगातार, रोज 12 बजे गुस्सा कर रही है, डाइवोर्स की धमकी दे रही है. So I told, don't worry, she is suffering with the blood deficiency. So we gave the treatment of blood deficiency. So she was having severe blood deficiency, और जब हीमोग्लोबिन चेक किया तो हीमोग्लोबिन था 12, 12. Then they told hemoglobin is good. Then how blood deficiency? Hemoglobin तो अच्छा है. Then how can you tell it's a blood deficiency? So it's the TCM blood deficiency. In the TCM blood deficiency, it's not the iron deficiency anemia. ये iron वाला anemia नहीं है, ये हमारा TCM वाला blood deficiency है. इसमें hemoglobin 12 होगा तो भी ये हम कहेंगे blood deficiency, and the sign is giddiness. And when there is a blood deficiency, जब blood कम होगा तो विंड बढ़ जाएगा, इसे कहते हैं इंटरनल विंड. विंड, इंटरनल विंड बढ़ने के दो कारण होते हैं. देयर आर 2 रीजन फॉर इंटरनल विंड.
In the female, most of the time it's because of the blood deficiency, और in the male it's most of the time because of the yin deficiency. हालांकि दोनों कारण मेल फीमेल दोनों में हो सकते हैं. Both the reason might be present in the male female both, but the female are more sensitive for the blood deficiency and male are more sensitive for the yin deficiency because of workaholic nature. But nowadays I am seeing even the female are suffering with the yin deficiency because female are also working in the office and they are also workaholic. फीमेल भी वर्कोहलिक हो रही है आजकल बहुत सारी, तो उनको भी yin deficiency हो रही है. तो कभी भी जब डेफिशिएंसी होती है yin की या ब्लड की, तो उस जगह बिंड आ जाती है, बन जाती है अपने आप. जैसे ये गिलास है, आधा खाली हो गया, तो आधे में क्या बिंड आ गई, अपने आप आ गई बिंड. जितना खाली हो गया उतना बिंड आ गई. सो दिस मच एम्प्टी, देन बिंड इज देयर. सो इंटरनल बिंड मींस इट्स क्रिएटिंग फ्रॉम इनसाइड. सो इंटरनल बिंड इज द वेरी बिगर कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर. इंटरनल बिंड भी हाई ब्लड प्रेशर का कारण हो सकता है. गेटिंग माई पॉइंट? अंडरस्टूड? कैसे पहचानोगे? पहचानना कोई कठिन नहीं है, लक्षणों के आधार पर पहचानेंगे. जब ब्लड की डेफिशिएंसी होती है तो शाम को चक्कर आते हैं, दिमाग को ग्लूकोज नहीं मिलता, तो भूलने की बीमारी होती है, हर चीज भूल जाते हैं. वी आर फॉरगेटिंग एवरीथिंग एंड पाल्पिटेशन माइट बी देयर. और हमने समझा था, अगर हमने लॉज की बात करें, हमने लॉज में बार बार समझा था दैट व्हाट आर द साइन ऑफ ब्लड डेफिशिएंसी. But anyway, the most important sign will be giddiness in the evening and forgetfulness, memory loss. These are the main signs. तो चलिए अब पांचवें और आखिरी कारण की बात करते हैं. Let's talk about the fifth and final cause which is responsible for the high blood pressure, जो high blood pressure के लिए जिम्मेदार है. The fifth and final cause for high blood pressure, that is the deficiency of yin and yang both. yin भी गया, yang भी गया. Both are deficient. Many times it's happening. When the person is losing yin as well as the yang, means whole essence of the body. जब शरीर का पूरा essence ही चला जाता है, yin and yang की deficiency हो जाती है, in that condition the person is getting high blood pressure. So we will learn the protocol of each condition. हम एक एक condition का protocol समझेंगे. We are going to discuss the protocol of each and every condition. Got it? तो कौन बताएगा पांचों कारण एक बार? Anyone will explain all the 5 causes? Yes, Selva ji, please continue. So as per TCM, they said there is a 5 reason for the high BP. First thing is fire, liver fire ascending. So due to the aggressiveness, drinking of alcohol, the wind, the liver fire is increasing actually. This is a main reason for increasing the BP. So whenever people is very angry, we can see the red face and then red eyes and all. It is due to liver fire. And second reason is the deficiency of kidney yin, which is causing an excess of yang. It is that due to the deficiency of yin, the yang is rising. It is like an empty heat. So empty heat is also causing a high BP. And so in this reason, treatment is to improve the air condition. Yeah. So the people who is workaholic or who is awake for a long time, or anybody who is like stressing their life too much will fall into this category. Okay. And then third is the obstruction of phlegm and dampness. This is a formation of phlegm and dampness which is causing the blockage in any arteries, either coronary artery or any multiple arteries also. So, yeah, so it can create a pain and swelling and all that. So it is always better to leave a stomach empty for some time, so that when the stomach is empty, the phlegm which is accumulated in the body will be used at that time. So by that, we can reduce the phlegm in the body also. Phlegm and dampness. Yeah. And then the fourth point is the interior movement of liver wind. So every month, generally, when female is losing the blood every month, what happens is that the whichever part is empty, when the blood is reducing, the empty part has been filled with the wind. So wind is rising in the body.
So which is causing a weakness, giddiness in the evening, forgetfulness, memory loss, heaviness in the body, and even sometimes they get stroke too. So this is also causing the high BP. And generally, and next is that in female it is due to the blood deficiency, in male it is due to the indeficiency. Indeficiency is due to they are very workaholic. So they fall into the category. They may also get a palpitation as well. Okay. And fifth point is deficiency of yin and yang. So when both yin and yang is less, they lose the essence. When the basic essence is lost, the full body is being damaged and the BP is also increasing by that. Wonderful. Excellent explanation. Thank you so much, Silvaji. Wonderful. Okay, Sobaji, please unmute yourself. Sobaji. Yes, sir. For high BP, according to TCM, 5 important causes of high BP. First cause is ascending liver fire. Because of aggressiveness, liver fire will increase, and taking too much alcohol. This can increase liver fire. Yeah. And anger, face is flushed, eyes are red. Cause of liver fire. Yeah. And second cause is empty heat, deficiency of kidney in causing more yang excess. And treatment is AC. We have to treatment part AC treatment we have to give. High BP and working mentally. Because of working mentally and reading a lot, they can get stroke also. Yeah. That's And third cause is obstruction of phlegm and dampness. This cause the blockages of multiple arteries, causing high BP. Yeah. Eating greasy food and cold water directly from the fridge, and swelling, pain, blockages, and obesity, cholesterol, fat deposition, all due to this will cause high BP. And fourth cause is interior movement of the liver wind. Lean and thin person challenging the big person. Interior wind means blood is less and creating wind inside. Yeah. And female losing blood, not eating in time, not sleeping in time, creating blood deficiency. Wonderful. And wind will increase. The symptoms are evening giddiness, neck pain, memory loss, palpitation. Yeah. Excellent. Wonderful. Then blood deficiency sign, there will be internal wind can create stroke. And in TCM, it is not iron deficiency. Sign is giddiness, cause of internal wind. In the male, mostly cause of indeficiency. Yeah. And sometimes might be both for female and male. Yes. Any deficiency of blood is due to then internal wind will be caused. This creates high BP. And fifth cause is a deficiency of yin and yang. Both person is getting a high BP. Yin and yang deficiency. That's wonderful. all. Very, very excellent explanation. Thank you so much, Sobaji. So now one explanation I need in Hindi. कौन बताएगा हिंदी में? चलिए बताइए रत्न पारखी जी. कहाँ है रत्न पारखी जी? हाँ बताइए. सर 5 कारण है जो हाई बीपी करता है. हाँ. उच्च रक्तचाप बढ़ाता है. नंबर 1, जब लीवर की फायर गर्मी बढ़ जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, एग्रेसिव होता है, तो उसमें लीवर की गर्मी बढ़ जाती है, जिसके कारण से बीपी बढ़ता है. दूसरा है जब ईन की कमी हो जाती है और एक्सेस यांग हो जाता है, अधिक गर्मी बढ़ जाती है, जो अल्कोहलिक रहता है या रेस्ट नहीं लेता है, किडनी इनडेफिशिएंसी हो जाती है, एम्प्टी हीट हो जाती है, तो स्ट्रेस कंडीशन होती है, तो उसको हाई बीपी हो सकता है, होता है. तीसरा है जब
कोई फ्लेम ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है गर्मी उसकी, तो शरीर में डैम्पनेस बढ़ जाता है, जिसके कारण से आर्टरी उसकी ब्लॉक हो जाती है, और उसके कारण से कोल्ड कॉजेस डैम्पनेस होता है। और क्योंकि कारण ये होता है कि वो समय से खाता नहीं है, रेस्ट नहीं लेता, और इस कारण से उसको एनर्जी नहीं होती, और एक्स्ट्रा फ्लेम के कारण वो मोटा हो सकता है। और जो बेड कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, इसके कारण से भी उसकी बीपी बढ़ सकती है। फिर चौथा कारण है, जब लीवर में वात की अधिकता होती है और वो इधर उधर जाती है, तो उसके कारण भी उसको हाई बीपी हो सकता है। और जिससे जो वर्कहोलिक रहता है और उसमें खून की कमी होती है, उसके कारण से भी उसको हाई बीपी हो सकता है। हाँ, मतलब जब कमजोरी होने के कारण जब इंटरनल बिंड बढ़ती है, तो बिंड के बढ़ने से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। यूर राइट। इसका एक साइन है, मतलब हम समझ सकते हैं कि उससे शाम को चक्कर आते हैं। जी बिल्कुल, वो ब्लड डेफिशिएंसी होगी तो शाम को चक्कर आएंगे। जी। और जल्दी भूल जाता है और पाल्पिटेशन भी अधिक होता है। जी बिल्कुल। फिर पांचवा कारण है, जब शरीर का पूरा एसेंस खत्म हो जाता है, जब वो आराम नहीं करता है, न्यूट्रिशन नहीं लेता है, वर्कहोलिक रहता है और ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, तो भी उसको हाई बीपी, उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ सकता है। तो चलिए, आपने सभी 5 कारण बता दीजिए। देयर आर 5 रीजन। 1 इज लिवर yang ascending, second is kidney yin deficiency causing the yang, third phlegm dampness, 4 internal wind, and the 5 is deficient yin and yang both. तो चलिए, बहुत अच्छा, very nice. Now tomorrow we will see the treatment protocol of these all. कल हम इन सब के protocols की बात करेंगे. So thank you so much today. Now we'll close the session now. Now see you tomorrow. Good night. Sweet dreams.